Hi everyone. In this series on the old NCERT of R.S. Sharma, we'll be going through the entire book and we'll try and complete the book in 10 to 15 videos. And in this first video, we'll be doing the modern historians of ancient India. Now, I'm sure all of you know that this book is very important from the perspective of the civil services examinations as well as your NET and SET examinations. So, please subscribe for more such videos on the NCERTs. Now, let's get started. Colonialist views and contribution. This is the first heading, and so we'll start by saying that the modern research in the history of ancient India started in the second half of the 18th century, which means say after 1750s. Now this happened because of the needs of the colonial administration set up by the British. आप लोग जानते हैं that Bengal and Bihar came under the rule of the East India Company in 1765 after the Battle of Buxar, and now once you become the rulers, since they were ruling in alien land, they found it difficult to administer the Hindu law of inheritance. So, excuse me, in 1776, Manu Smriti, the law book of Manu, which was considered to be the most authoritative, was translated into English as a code of Gentoo laws. Gentoo basically was a slang used by the British in the 17th and 18th century, and it encompassed all the people who were not Muslims. Now, this term was later replaced by the Hindu, and it kind of became derogatory in a sense. So yeah, let's get back. That the pundits, now there were these pundits and Maulvis who were associated with the British judges, and that is how they used to administer civil law of the Hindus and the Muslims. Now, now this effort, so you understand that after the British became the rulers of Bengal and Bihar, now there was this effort to actually understand the ancient laws and customs, which would kind of make them better administrators. Now, this effort culminates with the establishment of the Asiatic Society of Bengal in 1784 in Calcutta. This Asiatic Society of Bengal was set up by a civil servant of the East India Company named Sir William Jones. Now, please remember that William Jones also translated a drama written by Kalidas, which was the Abhijanana Shakuntalam. He translated it into English in 1789. The Bhagavad Gita was also rendered. It had been rendered into English by Charles Wilkins in 1785. The Bombay Asiatic Society was set up in 1804, and the Asiatic Society of Great Britain was set up in London in 1823. Now, what is important is that William Jones made a point that the European languages and the Indian languages, Indian and Iranian languages, that the European languages were very similar to Sanskrit and the Iranian languages, and that all these languages had a common origin or a common, basically a common source. So now this aroused the interest of the European scholars, and it actually gave a push to Indological studies. Now, the most prominent amongst the people who were involved in this exercise was the German-born scholar Max Muller, who spent most of his time in England.
So after the revolt of 1857, so you must have read about this revolt. After this revolt, the British kind of realized that they needed a better and a deeper knowledge of the manners and social systems of an alien people over whom it had to rule. क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, आपको डीपर नॉलेज नहीं होगा मैनर्स और सोशल सिस्टम्स का, तो आप अच्छे रूलर्स नहीं बन सकते। और अगर आप उस तरह से अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे, सो दैट वुड ब्रीड डिसकंटेंटमेंट एंड सब्सिक्वेंटली गिव राइज टू अ नंबर ऑफ रिवोल्ट्स एंड रेबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सो इसी सेंस में इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया जाना स्टार्ट होता है एक मैसिव स्केल पे अंडर द एडिटरशिप ऑफ मैक्स म्यूलर, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। ही वाज अ जर्मन बोर्न स्कॉलर who was very much involved in the Indological studies. So 50 volumes, some in several parts, were published under the Sacred Books of the East. Sacred Books of the East नाम के टाइटल से 50 वॉल्यूम्स पब्लिश की जाती हैं। इनमें से बहुत बहुत फ्यू चाइनीज और इरानियंस थी, बाकी सारी प्रिडोमिनेंटली एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स का एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट थी। नाउ अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है दैट ये जो बुक्स ट्रांसलेट होती हैं इन ओरिएंटलिस्ट्स के द्वारा, इनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, ऑल द पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन इंडोलॉजिकल स्टडीज, earlier involved in these studies. Now they made a number of generalizations अपनी इंट्रोडक्शंस में, इन वॉल्यूम्स की इंट्रोडक्शन में उन्होंने बहुत सारी जनरलाइजेशंस की। जो पहला जनरलाइजेशन था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और सोसाइटी के बारे में। सो पहला जनरलाइजेशन ये था दैट द एंशिएंट इंडियंस लैक द सेंस ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फैक्टर ऑफ टाइम एंड क्रोनोलॉजी। दैट इंडियन हिस्ट्री में कोई भी क्रोनोलॉजी का एक क्रोनोलॉजी नहीं थी। सेकेंड वॉज दैट इंडियंस वर accustomed टू डेस्पोटिक रूल। Now this is very interesting and आपको आगे समझ आएगा कि what was the connotation of these generalizations. Indians जो हैं वो despotic rule या फिर autocratic rule के accustomed हो चुके थे। और तीसरा ये था कि Indians spiritualism में engrossed हैं, वो सिर्फ अदर वर्ल्डली दुनिया में नेक्स्ट वर्ल्ड के बारे में सोचते रहते हैं और वो इस दुनिया की प्रॉब्लम्स में, इस दुनिया की प्रॉब्लम के साथ उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। नाउ इन अ सेंस दे वर एक्चुअली बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द इंडियंस। वो ये कह रहे थे कि इंडियंस बहुत उनकी स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज्यादा उनकी एडवांसेस हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, अच्छी बात कर रहे थे। लेकिन ये एक नेगेटिव, एक तरह से पॉजिटिव नहीं था, बल्कि एक नेगेटिव कॉनोटेशंस भी थे इस स्टेटमेंट के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यह भी कहा जाता है कि इंडियंस ने कभी भी नेशनहुड की या फिर सेल्फ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया। सो ये मैक्सिमम मेनी ऑफ दिस जनरलाइजेशंस अपेयर होती है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, जिन्होंने फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री लिखी एंशिएंट इंडिया की 1904 में। नाउ स्मिथ का अप्रोच जो था वो प्रो इंपीरियलिस्ट था। प्रो इंपीरियलिस्ट मीनिंग obviously because he was a part of a member of the Indian civil services, और उन्होंने फॉरेनर्स के रोल को एंशिएंट इंडिया में बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। अलेक्जेंडर के इन्वेजन को उनकी बुक में सबसे बड़ा पार्ट मिलता है, सबसे ज्यादा अलेक्जेंडर के इन्वेजन को डिस्कस किया जाता है। और इंडिया को एक लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म, इंडिया को एक ऐसी लैंड कहा जाता है जहां पे हमेशा से डेस्पोटिज्म और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, और जिन्होंने कभी भी पॉलिटिकल यूनिटी एक्सपीरियंस नहीं की unless until the establishment of the British rule. Now आप कनेक्ट कर सकते हैं that ओरिएंटलिस्ट की ये जितनी भी जनरलाइजेशंस थी, वी स्मिथ की बुक में ये साफ निकल के आता है कि क्योंकि इंडिया में अभी तक पॉलिटिकल हिस्ट्री कभी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री यूनिटी नहीं रही,
और ब्रिटिश के आने के बाद ही इंडिया को पॉलिटिकल यूनिटी मिलती है। और आप ये समझ सकते हैं, ये इन्फर कर सकते हैं कि ये बेसिकली जस्टिफाई कर रहे थे कॉलोनियल कॉलोनियल रूल को या फिर ब्रिटिश रूल को। तो जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो ये है कि हिस्ट्री को एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द कॉलोनियल रूल यूज किया जाता है इस एज में या इस टाइम पे, और इसी को कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है। जो और वी स्मिथ की बुक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम सम अप करें तो ब्रिटिश इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो थी, उन्होंने इंडियन डेनिग्रेट किया इंडियन कैरेक्टर और अचीवमेंट्स को, और उन्होंने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया। और ये जो जनरलाइजेशंस थी जो इन हिस्टोरियंस ने बनाए, जनरलाइजेशंस दैट दे मेड, दे वर ग्रॉसली एग्जैजरेटेड। और उस उसमें और ये बेसिकली प्रोपेगेंडा मटेरियल था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की परपेचुएशन के लिए। और इसमें एम्फेसिस ये था कि इंडियन ट्रेडिशन में हमेशा से एक आदमी के पास ही सारी पावर्स रही है। मतलब जब वो जनरलाइज कर रहे हैं दैट इंडिया हैज ऑलवेज हैड अ डेस्पोटिक गवर्नमेंट, दैट मींस दैट जो ब्रिटिश डेस्पोटिज्म है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसमें सारी पावर्स एक वाइसरॉय के पास है और बाकी इंडियंस के पास कोई भी पावर्स नहीं है, और ब्रिटिश उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि दिस इज हैपनिंग, दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस एजेस, राइट? सो इंडियंस आर यूज्ड टू दिस, इंडियंस हैव ऑलवेज हैड अ डेस्पोटिक गवर्नमेंट। Another generalization was that Indians were always involved in spiritual affairs, meaning कि आप इंडियंस, आप अपने स्पिरिचुअलिज्म में, आप अपने अदर वर्ल्ड नेक्स्ट वर्ल्ड में लगे रहो, हम आपको गवर्नमेंट एंड यू आर नॉट केपेबल ऑफ रूलिंग योरसेल्फ, राइट? सो दिस इज व्हाट द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी इज ट्राइंग टू इंफर, दैट आप अपने आप को रूल नहीं कर सकते, सेल्फ गवर्नमेंट आप नहीं जानते, तो इसलिए हमारा यहां रहना, हमारा रूल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेलबींग। ओके, और ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स थे एग्जैक्टली दैट, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रूल इन द पास्ट एंड देन यू कैन नॉट मैनेज योर अफेयर्स इन द प्रेजेंट। सो इन जनरलाइजेशंस के हार्ट पे ये था कि इंडियंस वर इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। नाउ कम्स द रिएक्शन। नाउ वी सी another strand of historiography which is called the nationalist approach and contribution। बहुत सारे ऐसे इंडियन स्कॉलर्स थे जो इसी ट्रेडिशन में, वो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, और उनको ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी थी, दे ऑब्वियसली दे वोंट लाइक द काइंड ऑफ generalizations that were being made about the Indian society, and they were kind of irked by the colonial distortions of the Indian past। तो इसीलिए उन्होंने जो हमारे सोर्सेस थे, एंशिएंट सोर्सेस थे, दे स्टार्टेड एन एग्जॉस्टिव रिसर्च एंड केम विद some fascinating contributions or some fascinating studies, now which were good in a sense, but they had their own problems as well। सो उन्होंने जो ब्रिटिश आइडिया था या फिर जो ब्रिटिश आर्ग्यूमेंट था दैट द इंडियंस वर नॉट केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स, वी सी दैट देयर वर अ नंबर ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस who did a minute interpretation of the ancient texts wherein they showed that republics existed in ancient India, and that India did have self-governing institutions। इसमें हम देखते हैं दैट now Rajendra Lal Mitra's text is very important, who published some Vedic texts and wrote a book entitled Indo-Aryans। महाराष्ट्र में हम देखते हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। they wrote R.G. Bhandarkar constructed the political history of the Deccan, of the Satavahans, and the history of Vaishnavism and other sects। और उसके बाद and he also advocated widow remarriage and castigated the evils of caste system and child marriage। V.K. Rajwade, he went V.K. Rajwade wrote the history of the institution of marriage,
He wrote it in Marathi in 1926. And then the third was P.V. Kane, who was a great Sanskritist, and his work is called as the History of the Dharma Shastra, and was published in 5 volumes in the 20th century. Now, the Indian scholars diligently studied polity and political history to demonstrate that India did have its political history and that the Indians possessed expertise in administration. इसमें देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो एपिग्राफिस्ट थे वो पब्लिश करते हैं बुक्स अशोक पे एंड द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क पब्लिश होता है बाय H.C. राय चौधरी who constructed the history of ancient India from the time of the Mahabharata war and from the time of Mahabharata war to the end of the Gupta Empire. Another important text was written by R.C. Mazumdar. He was the general editor of the multi-volume publication History and Culture of Indian People. Then K. Nilkant Shastri, he was from the south and he wrote a history of ancient India, and then to write a history of South India, he published another book which was called A History of the South India. And then until 1960, political history attracted the largest number of Indian scholars who also glorified the histories of their respective regions on dynastic lines. And then another important book from a very prominent scholar known as K.P. Jaiswal was this was basically a political history, but the greatest merit of K.P. Jaiswal's work lay in exploding the myth of Indian despotism. Now, K.P. Jaiswal in 1910-12 wrote several articles to show that republics existed in ancient times and enjoyed a measure of self-government. His book was his findings were published in Hindu Polity in 1924. Now shift. So let us kind of conclude the nationalist historiography. So nationalist historiography. Now you have to remember that all these historians were trained in the in the modern empirical Western writing of history in that sense. So they were not actually criticizing the Western models, whatever the Western models were there through which the Westerners were looking at the history. These people were not actually kind of challenging those institutions, the institution of democracy, institution of social reform, institution of self-government, because all these people were trained in those kind of institution. I mean, in that kind of history. So they just started looking for parallels within the Indian history. They just उन्होंने उन्हीं institutions को primacy देते हुए इंडिया में उन institutions को खोजने की कोशिश की, और जो भी हमारे जिनको ब्रिटिश इविल कहते थे, इन्होंने they started a tirade against those evils so that India could also become a modern progressive society like that of England. Now, this is what was the idea of these historians, because they believed in all those institutions. एंड नाउ इसका एक तरह से साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हो सकता है कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से बेटर थे, बट हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस वर एक्चुअली looking at those institutions from the mirror of what was espoused by the European or Western historians. Now, we see that there was a shift to non-political history. And in this shift, we see that British historian A.L. Basham, who was a Sanskritist by training, he publishes his book that was The Wonder That Was India. And then there was D.D. Kaushambi, his book An Introduction to the Study of Indian History.
later popularized in the civilization of ancient India in historical outline, was very important in this sense. So, Kwashambi was a Marxist historian who followed the materialist interpretation of history, which is derived from the writings of Karl Marx. So I think this should be it. These are some of the texts that you have to remember, and this setup as to how as to what were the reasons that the colonial historiography came into being, what were the main traits of that historiography or the main characteristics of that historiography. Then how does the nationalist reaction come about, and what were the chief characteristics of the nationalistic writing of history, and who were the main proponents within that strand. And then comes then comes a shift to non-political history, and it included some Marxist writings, and there were so many other schools which came after this, but that has not been discussed in this chapter. I will have a separate we can have a separate video discussing all these historiographies, and then there you'll get a fair idea as to how these different schools had different interpretations regarding the history of ancient India. Thank you for watching. We'll meet in the next video on another chapter. Thanks.